हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने फंक्शन के बारे में देखा और हम जितना भी कोर फंक्शनैलिटी थी पाइथन की अभी तक देख चुके हैं। नाउ वी विल सी कि हम किस तरीके से एक फाइल में इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रख सकते हैं, मतलब हाउ टू पुट फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड क्लास इनसाइड वन फाइल, है ना। तो ये फाइल कुछ नहीं है, इस फाइल को ही हम मॉड्यूल बोलते हैं ना। सो एनी डॉट पी वाई फाइल विच इज कंटेनिंग all kind of data that is related to a function, variable or classes is nothing, it's a मॉड्यूल। तो आज की क्लास में हम मॉड्यूल के बारे में देखेंगे कि भाई मॉड्यूल होता कैसे है, हम मॉड्यूल को किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं हमारे दूसरे प्लेस पर, किस तरीके से हम यूजर डिफाइंड मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे, है ना। सो हियर लेट वी स्टार्ट। सो बिफोर मूविंग फर्दर, कैन यू सी दिस व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ पैकेज इन पाइथन। So here you can see the package. Packages contain the multiple modules. Package it also it contains the sub package. Under this sub package, it is contain the modules. And one more thing that need to be added here, inside these packages, you will be having modules, and under this module, you will be having various variables. You will be having various functions, classes. So from this stage here, you will have collection of all the data inside this module file, and these module files will be arranged in the form of sub package, and these sub packages are combinedly arranged in the form of package. So for this video we will be discussing about the module only. The next video we will be discussing about the packages. So let me see how to define module, है ना। So मेरे पास एक फाइल है, suppose the name of this file is the module1, and as I have discussed that it contain all the things, variables, function and classes. So let me define everything inside it. Suppose I'm taking x is equal to one variable, that is 20, y is equal to, that is 30, and now we are defining one class inside it, that is class A. Inside this class, suppose we are defining one function, that is constructor. We will discuss it in the detail later in the later videos, and just for the example purpose I am discussing about the class here, and I'm just doing the print here. I need one tab. Here, hello is class A. Now let I define one more function here. Define hello, and I'm passing self here. Inside this, we are having print, that is hello world. This module is nothing, it's a Python file. तो इस Python file के अंदर मैंने एक class भी define कर दी है ना. Now I'm defining one function f here, and I should say a here. So this a1 is the function here, and inside this function I am just printing hello, I am function a. You see this inside this file, module1, we have defined not only a class, but we also defined a variable and functions. अब इस फाइल को जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है यहाँ पर, कि मैंने कुछ, आप देखिए, इंपोर्ट्स करे हुए हैं, लाइक यू कैन सी द इंपोर्ट ऑफ रैंडम टाइम, है ना। So these random and times are nothing, these are the module which are imported, है ना। So we have defined this module, this .py file. Let me try to have it in our Jupyter notebook. हम इसको import करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत important बात है, can you see I have done the pwd here, and my location of this file is a Rahul, that is the RGB videos, है ना। So this module should be inside this RGB videos only, otherwise you will not be able to import. तो मैं इस module को import करने की कोशिश करता हूँ,
दिस डॉट पी वाई फाइल को मैं इंपोर्ट करता हूँ मॉड्यूल, दैट इज when I run this code, so can you see this? I'm not having any kind of error. It means that just like these modules, I've just defined this Python file and I could be able to access it. Let I try to have the variables of this print module 1, this module 1 dot x. When I run this code, so can you see in the module we have stored the 20, and if I access for the y, so can you see here, for this I am having this value that is 30. Can I access this function even? Yes, for this particular module. Suppose if I access this function, that is module 1 dot even, when I run this code. So can you see the hello I'm a function A? What does it mean? To define a module in a Python, what I need to do? I have to write one Python file here, .py file here, and that file is stored at the particular memory location. जहाँ पर मेरा नोटबुक है वहीं पर मैंने यहाँ पर इस फाइल को रख दिया, जिससे इसके पाथ में पूरा क्लियरेंस रहे और हम क्लियरली इसको एक्सेस कर पाए. So can you see this? This .py file is nothing. It's a module. For this module, I'm accessing inside my Jupyter notebook. तो किसी भी मॉड्यूल को बनाने का तरीका है, आप उस मॉड्यूल को .py फाइल बनाइए, उस .py फाइल को आप अपने जुपिटर नोटबुक में या किसी दूसरी फाइल में भी यदि आप यूज करना चाहते हैं तो यू कैन यूज इट वेरी वेल, है ना. अभी देखिए मैंने आपको इस फाइल में एक्सेस करके देखा. हम चाहते तो इस फाइल को मॉड्यूल 2 को रन करें यहाँ पर, मॉड्यूल 2 को रन करके भी हम इस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइक इंपोर्ट मॉड्यूल 1 एंड let I take same code here, let the control C and control V. For this, suppose I run the code in the particular location where memory is available. Suppose uh, 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 for this file, and I'm just saving it. And when I execute this file, it is a Python. That is module 2 .py. So when I run this code, can you see the output is 20 here? So I'm creating this .py file in a one py file. I'm accessing this module inside another file that is also the form of module. So there is the possibility of the interaction of the multiple modules. The modules are stored in the form of .py फाइल. तो मैंने एक फाइल से दूसरी फाइल में मॉड्यूल को एक्सेस करा. सिमिलरली वही फाइल को जो हमने देखा था अभी, हमने जुपिटर नोटबुक में भी एक्सेस करा उसको और हम प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज कर पाए, है ना. अब देखिए अभी हमने एक सिंपल वे देखा जिसमें हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, है ना. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस पॉसिबिलिटीज टू एक्सेस द मॉड्यूल. वेरियस पॉसिबिलिटीज access the, or I will say, or import the module. हम किस तरीके से कर सकते हैं? अभी सबसे आपने देखिए बहुत सिंपल तरीका जो हमने देखा, हमने इसको इंपोर्ट करा, मॉड्यूल 1 को हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर, और इस मॉड्यूल 1 को इंपोर्ट करके हम इसके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करी हमने, जैसे कि मॉड्यूल 1.py, है ना. सो वी कुड बी एबल टू डू दिस. इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इस मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा है ना. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी कैन हैव वन मोर कॉन्सेप्ट हियर, द मॉड्यूल एलियासिंग. मॉड्यूल एलियासिंग जो रहेगी, इसमें हम क्या करेंगे, मॉड्यूल एलियासिंग के लिए हम सेम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं. सपोज दैट इज योर मॉड्यूल 1 एस एम. तो अब जब भी मैं इस मॉड्यूल को रेफर करूंगा ना, मुझे इसको मॉड्यूल 1 कॉल करने की जरूरत नहीं है. सिंपली आई विल बी राइटिंग द प्रिंट m डॉट x. व्हेन आई रन दिस कोड, सो कैन यू सी द आउटपुट इज 20 हियर, है ना. सो दिस इज व्हाट द वे टू एलियास द मॉड्यूल नेम एंड यूटिलाइज इट. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर,
देखिए मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट करा था, लेकिन इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद यदि मैं चाहता, तो क्या मैं केवल प्रिंट वाई कर सकता था यहाँ पर? Okay, so you can see this. Here is the y is not defined because we have imported the module, but all the data is not available inside the memory. So what I need to do, if I want the every data to be available inside the memory, तो मुझे इसको किस तरीके से करना पड़ेगा? From module one import everything, है ना? So from this module I am importing everything. When I run this code and when I try to print the value of y, see the output is 30. It means that all the data is available inside and inside the main memory. And suppose I want to call the a1 function that we have defined here. Can you run this code? So hello, I'm a function a. But previously you have to use this alias or you have to use the module name. So these are the various ways to have the modules. Similarly, you can have multiple module access at the same time. Like suppose I'm writing import module 1 and I can do the module 2 also. So when I access these two, just a minute, it should be module 1 capital M. Here it should be the capital M module 2. So can you see we are having no error, but we have imported the module 1 and inside the module 2 we have printed the module 1.x. That is what the reason we achieved the output as a 20 because this complete module has been accessed. अब मैं यदि इसमें बात करता हूं कि मुझे इनको एलियास करना है, so I can do as m1. Similarly here I can do as m2. When I run this code, so can you see this? Now I have to once I have aliased here, then I have to call the individual things here, है ना? तो अब कहीं ना कहीं हम मॉड्यूल को मल्टीपल मॉड्यूल्स को एलियासिंग के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस पॉसिबल वेज टू हैव अ मॉड्यूल. ओके, सपोज आई वांट टू सर्च समथिंग अबाउट द मॉड्यूल, है ना? सो हाउ टू नो अबाउट द मॉड्यूल? So to know about the module, what I need to do, I have to use the dir function when I will write about the module 1 here. When I run this code, should be module 1, sorry. When I run this code, there are some special variables of the Python. Apart from this, whatever we have defined in a user defined manner, that is also available inside the module. So whenever you want to access something about your module, you need to call the dir function. Suppose I have imported the math module here and I want to know the math that is already predefined module. And when I do the dir maths, you can see these are the available functions in a module. So that is what the way by which you can understand that what are the functionalities available inside your module or not. So till now we have learned about the module, how to define the module and how to access the module as well as how to know the module information. Let me move further. There is one special thing in the module that how the Python virtual machine maintain the things about the module. So we will be talking, we are talking here about one special variable that is nothing, it's a name, underscore name variable. That is very important variable, underscore name. So why I'm discussing it here. This is very important because suppose this module 1 is defined here. Let I take this module 2 here, and Python virtual machine want to keep the record. This file is executed itself or it has been called somewhere as a module. तो जब भी मैं ये कोड खुद अपने आप आएगा और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो पाइथन फाइल जो है, this python file will keep the record, this python name variable will keep the record as a main, otherwise it will keep the file name. So let me check it, है ना? तो क्या करना पड़ेगा, मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं यहाँ पर, define f1
In F1, let I check for if underscore underscore name underscore underscore variable is equal to underscore underscore name underscore underscore, then I will say print underscore underscore name underscore underscore and say print the code executed itself. So let I indent it. ठीक है, अब हमने क्या करा, इस फंक्शन को डिफाइन करा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, ये जो एल्स सेक्शन रहेगा हमारा, इट रिक्वायर वन मोर हिट। अदरवाइज हमारे पास जो इसका एल्स सेक्शन रहेगा, उस एल्स सेक्शन में हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि दिस फाइल इज नॉट एग्जीक्यूटेड इटसेल्फ, इट मींस दिस फाइल, लेट आई टेक द सेम कोड हियर, here we will check the name and I will do here code executed in other file. So I call this function f1. Here I call the function f1 also. Okay. So when I run this file, that is the module 2. Let I run this file, that is a module 2 again. So can you see the module 2 name? Okay. If underscore underscore name equal to should be there. That is what the error. So can you see this? The output of the name variable is the main and the code executed itself. So what we have done, हमने इस module 2 फाइल को कहीं पर भी import नहीं किया हुआ है ना? हमने module फाइल को जो खुद कोड लिखा हुआ था उस मॉड्यूल फाइल में, उसी को एग्जीक्यूट करा है। तो पाइथन वर्चुअल मशीन ने इसके करस्पॉन्डिंग जो नेम वेरिएबल है, इसका जो स्पेशल वेरिएबल है जिसमें मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन वो होल्ड करके चल रही है, उसने उसको मेन असाइन करा हुआ है। लेट आई टेक अनदर थिंग हियर, let I import this module, import that is a module 2 as m करता हूं मैं इसको, then I do m dot f1. So when I run this code, has no attribute, that is f1, yes, mod m, yes, it should have module 2 the f1 here. फाइल पहले तो हम मॉड्यूल 2 देखते हैं, फाइल हमारी इट्स वर्किंग फाइन, dir m is containing the module 1, fine, it should be saved. I think this file is not saved right now. Yes, what is happening here, हमें इसके कर्नल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रीवियस मॉड्यूल जो है उसको कॉल कर रहा है ना। नाउ दिस फाइल हैज बीन सेव्ड, व्हेन आई रन दिस कोड अगेन एंड देखिए द कोड एग्जीक्यूटेड इन अनदर फाइल। व्हाट इज हैपनिंग, हमने मॉड्यूल को दूसरे प्लेस पर एग्जीक्यूट करा। हमने हमारी नोटबुक फाइल में जब मॉड्यूल को लिया तो यू कैन सी दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड एट अनदर प्लेस। नाउ यू कैन चेक फॉर द dir also, so this is the f1 is available. So what is happening here, we for a module the python virtual machine maintain one special variable, that is a name variable, by which it identify the module has been called in another file or it has been called itself. तो हम .py फाइल है उसको हम स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, हम एक मॉड्यूल भी बोल सकते हैं और एक .py फाइल भी बोल सकते हैं। So now you are able to understand various modules, like we have used the random module, we have used the time module, and we have used the various kind of modules like for example math module here. So now you are able to understand
कि यदि मुझे किसी मॉड्यूल को या किसी .py फाइल को यूज़ करना है मेरी एप्लीकेशंस में जो मैं बना रहा हूँ, तो मुझे सिंपली उस फाइल को इंपोर्ट करना है लाइक दिस import random. What I need to do when I will be doing this random here and run this code. So can you see this everything, the all the information that is available in your random function? Can you see this, the choice function and choices function we have used in our previous example? So why this you will be able to identify all the functions, all the special variables, even all the classes available in your modules. So I hope it's all about the module, and you can explore more about the modules. For this video, it's all from my side. Thank you.